So we were discussing this question and it is in continuation with the previous session. So you need to find out the kinetic energy at the maximum height. So at maximum height, the velocity to be used is 4.6, and when the ball reaches to the car reaches to the ramp at when it leaves the ramp P, it is 5.5. So what is going to be the formula which we are going to use? Half into m. It is maximum height, so velocity is 4.6 square, whole divided by half into mass. The velocity is 5.5 square. So this mass and this cancels out, and eventually we are going to end up with a ratio, and this ratio will be appearing as 0.70. So this is how this ratio will be formed. Now question says, this is very interesting question, and I really want you people कि इसको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में सुनिएगा। ये जो ग्राफ बनाना है हमने, अब वो क्वेश्चन कह रहा है द रैम्प इज रिमूव्ड. Okay, so initially what was the scenario? This was a scenario, the car was being uh, launched from the tip of this ramp, and the car moved to the other end where there was another ramp like this, right? This is the scenario. But now what happened, that there is a ramp, the ramp, and the car is launched, like it was launched, and now रैंप हटा दिया गया तो कार जो है वो नीचे जाके ग्राउंड पे जाकर हिट हुई है या गिरी है जो भी है. सो ग्राउंड पे जाकर उसने कनेक्ट किया. ठीक है, दिस इज द सिनेरियो. वो कहते हैं द कार अगेन लीव्स रैम्प पी एज इन बी, नाउ लैंड्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. सो इट हैज, दिस इज पी पॉइंट, this is P point, and this is was Q. So it has leave the P, ramp Q is removed. Now it has moved to the ground. Now it has removed to the ground. So question says the car leaves ramp P at time t equals to 0 and lands on the ground at time t equals to capital T. On figure 1.2, sketch the variation with time t of the vertical component Vy of the car's velocity from time t equals to 0 to time t equals to capital T. Numerical value of Vy and time t are not required. इसमें numerical value नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ शो करना है. So what is the behavior of the graph when it is velocity time graph when there is no air resistance? तो जब air resistance, याद रखिएगा ये बात मैं recall करता हूँ, मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है. When there is no air resistance, whenever there is no air resistance, acceleration is considered as constant, and constant acceleration will be taken as 9.81 meter per second square. And as this acceleration is taken as 9.8 meter per meter, and this means that when acceleration is constant, so how does a vt graph is drawn? The vt graph is drawn as straight line. वीटी ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. अब एक बात, पहली बात तो ये कि when from point P, when it is rising to the maximum point, let's say this is the maximum height, दिस इज द मैक्सिमम हाइट. तो जब भी आपकी ये गाड़ी मैक्सिमम हाइट या कोई भी पॉइंट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, it means its vertical velocity gets zero. So we can say the vertical velocity at this point is zero. अब उसने हमें क्या कहा है, ग्राफ किसका बनाना है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का आपने ग्राफ बनाना है. तो जब वो अपनी एक पॉइंट से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और फिर नीचे को फॉल कर रहा है, तो जब वो ऊपर को राइज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. एंड हाउ वी ड्रॉ द डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ? इट विल बी ड्रॉन इन दिस स्पेसिफिक वे. फॉर इंस्टेंस, यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन. दिस इज हाउ अ स्ट्रेट लाइन विल बी ड्रॉन. ठीक है. और फिर वो कहता है कि वापस वो नीचे अब फॉल करे, तो जब वो नीचे को फॉल करे, व्हेन व्हेन इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वो सेम लेवल से और नीचे जा रहा है तो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी. सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ विल बी ड्रॉन अगेन अ स्ट्रेट लाइन बट टू सम हायर वेलोसिटी. तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बनेगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. और ये चीज आप देखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी इज हाई and here the velocity is less. ठीक है, so this is how the graph will be drawn. Is this fine? जी बच्चों, आगे चलूं मैं?
Yes, sir. Okay. ओके, हफ्सा अहमद आस्क्ड द क्वेश्चन, सर वेलोसिटी नीचे वाली साइड पर हाई क्यों है? अगर आपको याद हो, जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था कि व्हेन एवर वी विल बी टेकिंग द लॉन्चिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट सेम, तो जितनी वेलोसिटी से ये लॉन्च होती है उतनी वेलोसिटी पे उसी सेम लेवल पर फॉल करती है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये रैंप हटा दिया, सो इट हैज कवर्ड मोर डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस नीचे को इसने वर्टिकली कवर किया। सो डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, velocity gets more, v gets more, the value of velocity gets higher. Is it fine? ठीक है, तो जब ये और नीचे जा रहा है तब हम वेलोसिटी को ज्यादा कंसिडर करेंगे। ओके जाइना, so when do we have our physics test? Okay beta, the physics test is going to be in the coming week. I'll announce it on Monday, and this test is going to be thoroughly from this projectile portion. Okay, so this question is completed. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, सो आई विल बी आस्किंग कि क्वेश्चन 7 ये आप खुद सॉल्व करेंगे, तो देर इज नो मच tedious पार्ट और टास्क इन क्वेश्चन नंबर 7. सो फॉर द टाइम बीइंग यू मे जस्ट जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किस पे आएंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है। क्वेश्चन 8 भी आप खुद सॉल्व करेंगे। उसी तरह ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है नीचे को, और उसकी फिर वर्टिकल हाइट्स निकालनी है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये अब हम सीख चुके हैं, और सिंपल सा टास्क है, फाइंडिंग vertical parameters you will be using vertical components, finding horizontal parameters you will be using horizontal components. Okay, question number 9 is just with respect to the equations of motion के ग्राफ से आपने इसको कैसे derive करना है, तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो question number 9 is pretty simple. इसी तरह the ball is going to hit the wall, and this is your homework as well. So question 9 आप खुद करेंगे, ठीक है? Solve the question number 9 on your own. ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये बेसिक सा सवाल है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट इज प्रीटी मच सिमिलर। सो सी क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ बॉल विच इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। सो दिस इज अ बॉल, right? This is ball which is being fired horizontally, and it is fired with a speed of 41 meter per second from a stationary cannon at the top of a hill. The ball lands on the horizontal ground. Then this is the vertical distance covered is how much? The vertical distance covered is 57 meter below the cannon. So question says assume air resistance is negligible. आपने ये assume करना है कि air resistance मौजूद नहीं है। Question says show that the time taken for the ball to reach the ground after it is fired is 3.4 seconds. So this question is again very much similar to the one like we have been solving previously. So see how will this work. Let me change the color. All right. So you need to find out the time for the ball to reach the ground after being fired after 3.4 seconds. So let's see what is first provided to us in this question. So ये horizontally move कर रहा है, तो horizontal velocity throughout क्या रहेगी? Same रहेगी. But what will be the vertical initial velocity? The vertical initial velocity will be 0 meter per second. Our initial velocity vertically at this point will be what? It will be 0 meter per second. So it is launched from this point. Our initial vertical velocity is 0, and it is going to fall on the horizontal ground. We need to find out time, but we are not provided with any velocity which is going to hit vertically. So final velocity हमें नहीं पता. Okay, और हमें क्या पता है कि it is falling downward. We know the acceleration. Acceleration is 9.81 meter per second square. And what else we are aware? We are aware about the vertical height. So what is the vertical height we are going to have? That is 57 meter. So vertical height is 57 meter. Vertical displacement then 9.81. Time is t,
and uv is 0 meter per second. So which equation of motion we will be using to find out the time? So for finding out the time, we can use the equation as like s is equals to uh, ut plus half at square. So how we will be solving it? S is equals to ut plus half at square. U will be getting what? It will be getting 0. So displacement is 57, which will be 1 by 2. Acceleration is 9.81 multiplied by time square. So if you need to find out the time, so this time square will be equals to what? 2 into 57 whole divided by 9.81. And to find out the time, we will be taking the under root on both the sides. So this time will be equals to, when you will be solving this whole relation, it will be equals to 3.4 seconds. So our time will be 3.4 seconds. So questions that show that the time taken for the ball to reach the ground after being fired is 3.4 seconds. So yes, this is how it will be. It will be 3.4 seconds. Is this done? Next it says, find out the horizontal distance. अब आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू, जब भी आपने हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स निकालने हैं, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने, तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और आपको टाइम चाहिए. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? इट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. So what is the horizontal speed we are having? It is given in the question, the horizontal speed. The ball is fired horizontally with a speed of 41 meter per second. So horizontal speed is given to us, which is 41. The time is given to us, which we found in the previous part, which is 3.4. So horizontal distance will be how much? This will be equivalent to 41 multiplied by 3.4, which equates 140 meters. So our horizontal distance will be 140 meters. Next, it says that you need to find out the displacement. Okay, to determine the magnitude of the displacement of the ball of the cannon from where the ball lands on the ground. तो displacement का मतलब क्या है कि आपने कौन सा distance find out करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला path find करना है. So we are pretty aware that this vertical distance is known to us. What is this vertical distance? 57 meter. एंड वी आर प्रिटी अवेयर कि अभी हमने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया. एंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अपीयरिंग एज हाउ मच? 140 meters, which was just found in the previous part. तो ये हमारी displacement होगी. This will be the displacement vector from the start till the end. So if we need to find out this displacement as, how we are going to do this, we are going to take the help of Pythagoras theorem. We will take the help of Pythagoras theorem. So let's apply the Pythagoras theorem to this. How will this Pythagoras theorem is applied? So displacement S is equals to under root perpendicular square plus base square. So this will be 57 square plus of 140 square. So we are going to take the under root, and taking the under root, this is revealing us the value of 150 meters. So displacement will be equals to 150 meters. Is this fine, Bachu? Hello, are you with me? Okay, good. Next, we are moving onward. Up now it says कि draw a graph. अब आपने graph बनाना है. The ball leaves the cannon at time t equals to 0. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of the magnitude v of the vertical component of the velocity of the ball with time t for time t equals to 0 to 3.4 second. तो आपने vertical component of the velocity का जो graph बनाना है time t equals to 0 से 3.4 seconds तक. तो टाइम 0 से 3.4 सेकेंड मीन्स के
जो यहाँ टॉप से नीचे तक आते हुए फिर कितना टाइम लगा 3.4। और कॉन्टिन्यूसली इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज द रिलेशन वी आर गेटिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये कैसे इंक्रीज कर रही है, ऐसे इंक्रीज कर रही है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो होगी कांस्टेंट। So whenever we are having an acceleration which is constant, so how does the vt graph is drawn? It is going to be a straight line. It is going to be a straight line. And why it is a straight line? Because acceleration is constant. And will the straight line will be with a positive gradient or negative gradient? So as the velocity is increasing, our gradient will be positive. So our gradient will be positive. So how this graph will be drawn? This graph will be drawn like this way, a straighter line which will be drawn this way. So this shows that velocity is increasing at a uniform rate. Velocity is increasing at a uniform rate, or you can say that acceleration is going to be constant. So इसमें कोई numerical values चाहिए नहीं है ग्राफ को, तो सिंपल आपने शेप बनानी है. So we are not going to intervene with any values. Alright, this next part is related to momentum, so we are just going to skip it for the time being, right? The momentum पढ़ेंगे फिर हम discuss करेंगे इस part को. Moving onwards to the next question. Our next question is that the cannon now fires a ball of a smaller mass. तो एक small mass से जो है वो ball fire out हो रही है. So when a ball of a smaller mass is being fired out, uh, so assume that air resistance is still negligible. State and explain the change, if any, to the graph in figure 3.2 due to the decreased masses of the ball. तो आपने बताना है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें या नहीं पड़ेगा. तो आप देखिए कि एयर रेजिस्टेंस जब भी निग्लेजिबल है, सो यू आर गोइंग टू से दैट acceleration is going to be unchanged. ठीक है, acceleration is constant. So first of all you are going to write acceleration is constant. Acceleration जो है वो constant है, and it is not dependent on mass. Acceleration is constant and it is not dependent on mass. So there is no change in graph. ग्राफ के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ग्राफ विल रिमेन सेम, राइट. सो इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो गया. तो बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 11 भी उसी तरह ही है. आपको वर्टिकल हाइट्स, डिस्टेंस और ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है. कितना टाइम लगेगा टू रीच द टारगेट, तो ये आप देख लीजिएगा खुद. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. ये वही टॉप से नीचे आ रही है बॉल, सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट अ सिमिलर वे इट वाज सॉल्व फॉर द कैनन. उसी तरह आप इसको सॉल्व आउट करेंगे. सो आई एम लीविंग, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है इस क्वेश्चन में. आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ऑन यू. So try to solve this question out. And similar happens with this question number 13. So हमारे मेरे ख्याल प्रोजेक्टाइल के जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस है ना वो हो गए हुए फिनिश. ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व आउट करेंगे. And if any sort of trouble occurs, so you may discuss the questions in during the school with me as well, right? So we are just going to stop our lesson in this session, or we are going to stop our session here. बाकी फिर हम बात जो है वो स्कूल में डिस्कस करेंगे. राइट. सो गाइज, जो रिमेनिंग 3-4 सवाल इसमें रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. एंड वी आर एंडिंग अप द क्लास ओवर हियर. ठीक है. So take care everyone. Thank you very much for being patient. So inshallah we'll meet on Monday. Khuda Hafiz. Bye. Bye Ahmad Ali.